hot and wet equatorial climate located between 5 degree and 10 degree north south of the equator. इक्वेटर के 5 डिग्री और 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में है. द लो लैंड ऑफ द अमेज़न, द कॉन्गो, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. इस इक्वेटोरियल लाइन में लो लैंड जैसे अमेज़न, कॉन्गो, मलेशिया, इंडोनेशिया. Away from the equator, the influence of the onshore trade will give rise to modified type of equatorial climate with monsoon influence. तो ये इक्वेटर से दूर है लेकिन इनका ऑनशोर ट्रेड विंड जो है मॉडिफाइड होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट में मानसून इन्फ्लुएंस की वजह से. Climate temperature uniform high throughout the year with average monthly temperature above 80 degrees Celsius. Mean annual temperature around 24-30 degrees Celsius. Cloudiness and heavy precipitation with storm and lightning help to moderate heavy rain. Daily temperature. तो टेम्परेचर जो है वो पूरे साल भर एवरेज मंथली रहता है 18 डिग्री सेल्सियस. एनुअल टेम्परेचर 24 to 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है. क्लाउडी और हेवी प्रेसिपिटेशन ठंडर की वजह से होता है, लाइटनिंग की वजह से, जो हेल्प करता है डेली टेम्परेचर को मॉडरेट करने में. तो ये रीजन है इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है यहाँ पर. Precipitation heavy and well distributed throughout the year with average about 200 to 250 centimeter. Mostly conversion rain and orographic rainfall mountain. Precipitation यहाँ पे heavy और well distributed रहता है पूरे साल भर. एवरेज रहता है 200 to 250 सेंटीमीटर. ज़्यादातर कन्वेंशनल रेन रहता है. orographic rainfall रहता है mountain. No distant dry season. Very high relative humidity. more than 80 डिग्री सेल्सियस. ड्राई सीजन अलग नहीं रहता. रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है 80% ज़्यादा रहता है. डबल रेनफॉल पीक विंटर इक्विनॉक्स इन अक्टूबर. डबल रेनफॉल पीक होता है. ये इक्विनॉक्स कोइंसाइड करता है अक्टूबर के महीने में. Vegetation. Tropical evergreen rainforests lands of the planet with dense canopy covers salvas and Amazon. ये vegetation क्या है? Tropical evergreen rainforest lands का वो planet का लंग है. और dense canopy covers salvas Amazon में. Hardwood trees such as mahogany, ebony, creep epiphytes, wood, lemon, like liana, langa, teal, tall grass. Hardwood tree, mahogany, ebony, creep epiphytes, woody, climber, liana, lang, tall grass होता है. Distant layer arrangement is forest. High diverse trees are not found in pure stand of single species. High diversity झाड़ जो है वो single species के pure stand नहीं मिलता. So leaf later decompose faster than in any other biome, and as a result the soil surface is also most bare. तो leaf later जो decompose होता है fast वो दूसरे biome में soil surface होता है जो bare होता है. Less luxuriant secondary forest called Beluga is also found. Become luxury secondary forest Beluga भी मिलता है. Economic activity. Sparse populated area with indigenous people practicing hunting or gandering. Economic activity जो population area indigenous लोग
प्रैक्टिस करते हंटिंग और गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रैक्टिस हियर, लद्दाख मलेशिया, पंग्याम बर्मा, तामराई थाईलैंड, खनगिन फिलीपीन, खर्मा जावा, छिन्ना श्रीलंका, मिल्पा अफ्रीकन सेंटर में, झूम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. Tropical hardwood make lumbering difficult. Cocoa industry Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, and natural rubber and oil palm Malaysia and Indonesia Thailand. Cocoa industry Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, natural rubber, oil palm Malaysia, Indonesia thrive करता है. Crops like coconut, sugar, coffee, tea, tobacco, spice and sago cultivator. इस जगह पे कोकोनट, शुगर, कॉफ़ी, टी, टोबैको, स्पाइस और सागो कल्टीवेट होता है. कोबाल्ट माइनिंग कॉन्गो, गोल्ड माइनिंग इन द अमेजोनियन फॉरेस्ट ऑफ ब्राज़ील एंड पेरू. कोबाल्ट माइनिंग में कॉन्गो, गोल्ड माइनिंग होता है अमेजोन फॉरेस्ट में, ब्राज़ील और पेरू में. लाइव स्टॉक फार्मिंग इन अफ्रीका इज handicapped by tested flies that cause nagla and deadly disease. लाइव स्टॉक फार्मिंग अफ्रीका में टेस्टा फ्लाइज जो रहता है उसकी वजह से नागना होता है जो खतरनाक डिसीज़ है. ट्राइब्स गिमे, कॉन्गो बेसिन, ऑरेंज, मलेशिया ये सब होता है. Tropical monsoon climate. This climate is typically found in latitude from 5 degree north to 30 degree north and south of the equator. ये climate जो है 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक होता है इक्वेटर में. Then the region witness complete reversal of best developed in the Indian subcontinent, Burma, Thailand, Laos, Cambodia, part of Vietnam and South China and Northern Australia. ये रीजन विटनेस करता है जिनके सीजनल रिवर्सल को डेवलप होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम का हिस्सा और साउथ चाइना जो नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया में है. सावन और सूडान क्लाइमेट. ठीक है, ये किसके बारे में है? ये ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट के बारे में है. ये सावन और सूडान क्लाइमेट के बारे में है. ट्रांसलेशनल टाइप फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट. इट इज कन्फाइन्ड विद इन ट्रॉपिक्स दैट इज फाउंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न. ट्रांजिशन टाइप रहते इक्वेटोरियल फॉरेस्ट और हॉट डेजर्ट के बीच में. ट्रॉपिक्स के बीचों बीच होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है. जनरली फाउंड इन अफ्रीका, सूडान, ईस्ट and southern Africa, Australia, South America and some part of India. In South America, Llanos, Orinoco's Basin, campus of Brazilian highlands. तो ये अफ्रीका में मिलते हैं, सूडान ईस्ट, सदर्न अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, कुछ इंडिया का हिस्सा, साउथ अमेरिका, ललान्स और ओरिनोको बेसिन कैंपस जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है. Climate. Temperature mean annual temperature greater than 80 degrees Celsius, extreme down on a range of temperature. Mean annual temperature ज़्यादा रहता है कंपेयर 80 डिग्री सेल्सियस में. Rainfall alternate hot,
रेनी सीजन, कूल ड्राई सीजन, रेनफॉल जो ऑल्टरनेट हॉट रेनी सीजन, कूल ड्राई सीजन में तो रेनफॉल कॉन्सेंट्रेटेड समर, रेनफॉल समर में कॉन्सेंट्रेट होता है। डेफिनेट ड्राई वेट सीजन, dry wet season, flood and drought are common, mean annual rainfall 80 to 160 centimeters. Drought common है, mean annual rainfall 80 to 160 सेंटीमीटर में होता है। Wind, prevailing wind are the trade winds. Trade wind bring rain to the eastern coast, but become dry by the time they reach the interior of the continent. तो ये ट्रेड विंड जो है वो बारिश लाता है ईस्टर्न कोस्ट में, लेकिन ड्राई हो जाता है जैसे जैसे कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। Harmattan, meaning the doctor wind, are the dry local wind while blow from the interior Africa to the Atlantic coast in Guinea and give relief from hot and humid climate by increasing rate of evaporation with resultant cooling effect. Harmattan जो है डॉक्टर विंड, हार्मटान का मतलब है डॉक्टर विंड, जो ड्राई लोकल विंड है जो ब्लो होता है अफ्रीका की इंटीरियर से लेकर अटलांटिक ओशन गिनी तक, और वो रिलीफ करता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट से। जब इवापोरेशन का स्पीड बढ़ता है तो उसकी वजह से इफेक्ट ठंडा होता है। Hot desert climate. Major hot deserts of the world are located on the western coast of the continent between 15 degree and 30 degree north and south. The hot desert climate दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट लोकेटेड होता है कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट में 15 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में। Identity of the hot desert is mainly due to the effect of offshore trade wind, thus also called as trade wind desert. हॉट डेजर्ट का आइडेंटिटी जो है वो ऑफशोर ट्रेड विंड का इफेक्ट की वजह से होता है, इसे ट्रेड विंड डेजर्ट भी बोलते हैं। एग्जाम्पल सहारा डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, अरबी ईरानियन था, कलहरी, तामीर मोहबे, सोनारो, अट्टाकम डेजर्ट। Climate condition in hot desert, trade wind desert. Every summer temperature is around 30 degrees Celsius. Rainfall scarce, less than 25 centimeters, unreliable. रेनफॉल जो कम होता है 25 सेंटीमीटर रहता है और ज़्यादा से भरोसा नहीं कर सकता। Aridity is high due to subtropical high pressure belt descending air offshore wind and dissecting effect of cold current. Aridity जो है ज़्यादा रहता है, सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट डिसेंडिंग एयर रहता है, ऑफशोर विंड एंड डिसिकेटिंग इफेक्ट रहता है कोल्ड करंट का। टेम्परेचर हाई थ्रूआउट द ईयर, कोस्टल डेजर्ट ड्यू टू maritime influence have much lower temperature desert interior, however experience much higher summer temperature and winter mild or rather cold temperature. पूरे साल में कोस्टल डेजर्ट मेरिटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से होता है, उनका टेम्परेचर कम रहता है, डेजर्ट इंटीरियर रहता है, एक्सपीरियंस करते हैं ज़्यादा समर टेम्परेचर, विंटर में जो है कोल्ड रहता है। द ऑनर टेम्परेचर रेंज इज वेरी ग्रेट, फ्रॉस्ट में ऑकर एट नाइट इन विंटर। डाउन ऑनर टेम्परेचर रेंज होता है, फ्रॉस्ट होता है नाइट में विंटर में, और एनुअल रेंज रहता है जो टेम्परेचर का in the interior of the continent is highest compared to coastal area because of the thermal difference between land and water. जो टेम्परेचर का एनुअल रेंज जो रहता है कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कोस्टल एरिया,
क्योंकि थर्मल डिफरेंस रहता है लैंड और वाटर के बीच में। Temperate continental steppe climate lie in the western wind belt, but they are so remote from maritime influence. The grassland are particularly treeless between 40 to 50 degrees north and south of the equator. Temperate continental steppe climate. तो ये वेस्टर्ली विंड बेल्ट में रहता है, जो रिमोट रहता है मैरिटाइम इन्फ्लुएंस से। ग्रासलैंड पर्टिकुलरली ट्रीलेस रहता है 40 डिग्री जिसका 55 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटर का। दे आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, स्टेपे यूरेशिया, पुस्तास हंगेरी, पायरस नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस अर्जेंटीना उरुग्वा, बुश वेल्ड नॉर्थ और साउथ अफ्रीका, हाई वेल्ड southern South America, down to the Canterbury, New Zealand. Steppe. Climate. Temperatures in variation with warm to hot, summer often exceeding 30 degrees Celsius and cold weather. Temperature सीजन वेरिएशन जो है वार्म रहता है, हॉट समर रहता है, 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहता है, कोल्ड विंटर रहता है। स्केल ऑफ टेम्परेचर इन नॉर्थन हेमिस्फीयर, स्टेppe टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, नेवर सीवियर मैरिटाइम इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर माइल्ड। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, क्लाइमेट का जो स्टेppe टाइप रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में सीवियर नहीं रहता है, मैरिटाइम इन्फ्लुएंस ऑफ विंटर जो माइल्ड रहता है। रेनफॉल इसका ये cool temperature western margin British type. Throughout the year with tendency towards a slight winter or autumn, maximum from cyclonic sources. Precipitation vary between 50 cm to 50 cm. So, slightly winter रहता है, autumn maximum रहता है, cyclonic source से precipitation 50 cm to 50 cm तक होता है। Economic activity, market gardening and mixed farming, rearing of animal, cultivation of propagated sheep rearing etc. तो यहाँ पर ब्रिटेन टाइप टेम्परेट एटमॉस्फेयर में क्या रहता है कि मार्केट जो है गार्डनिंग रहता है, मिक्स फार्मिंग रहता है, मतलब एनिमल रेयरिंग कल्टीवेशन दोनों भी होता है, शिप रेयरिंग होता है। Corals in India, coral reef found in Andaman Nicobar Island, Gulf of Kutch and Gulf of Mannar. इंडिया में कोरल रीफ जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है।
ocean mean temperature OMT and sea surface temperature SST. OMT ocean mean temperature रहता है, SST sea surface temperature रहता है. OMT is a more accurate predictor of the Indian summer monsoon than SST. ओशन मीन टेम्परेचर ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्टर रहता है इंडियन समर मानसून के लिए कंपेयर टू सी सरफेस टेम्परेचर से. इट मेजर थर्मल एनर्जी अप टू 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म एट डेट रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 meter, capture upper ocean thermal energy between SST. It also measures surface temperature. ये मेजर करता है थर्मल एनर्जी को 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म रेंज होता है 50 to 100 मीटर. कैप्चर करता है ओशन टेम्परेचर एनर्जी. SST से अच्छा हो तो मेजर करें सरफेस टेम्परेचर का. SST फ्लक्चुएट मोर ड्यू टू सरफेस इंटरैक्शन but lack representation of subsurface condition that significantly influence monsoon. तो SST जो है सरफेस सी सरफेस टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है सरफेस इंटरेक्शन की वजह से सरफेस कंडीशन का कम रिप्रेजेंटेशन की वजह से और इन्फ्लुएंस करता है मानसून को. Mechanism water. Ocean temperature remain higher than the land temperature in winter because ocean retain high heat longer due to their higher heat capacity. तो मैं विंटर का मैकेनिज्म ओशन टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहता है कंपेयर टू लैंड टेम्परेचर से. विंटर में ओशन जो है वो हीट को रिटेन करता है लंबे समय तक हायर हीट कैपेसिटी की वजह से. Salinity of ocean water. Ocean water का salinity. Salinity is the total content of dissolved salt in sea water. Salinity जो रहता है sea water में टोटल कितना salt dissolve होता है वो है. Factor affecting ocean salinity. Evaporation increases and precipitation decreases salinity. Example: Mediterranean Sea, Red Sea, high evaporation, high salinity. Evaporation ज़्यादा हो तो precipitation कम हो करता salinity. Mediterranean Sea, Red Sea, high evaporation, high salinity. The Red Sea receives very little precipitation rainfall. Also, no water enter the Red Sea from the river. Red Sea जो है उससे कम precipitation मिलता कोई वाटर एंटर नहीं होता रेड सी में नदी से. Ocean acidification. Acidification is the ongoing decrease in pH of the ocean water caused by absorption of excess carbon dioxide from the atmosphere. तो ओशन एसिडिफिकेशन जो है यहाँ पे pH कम होता है ओशन वाटर का जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा अब्जॉर्प्शन की वजह से होता है एटमॉस्फेयर से. This phenomenon affect the growth and survival of calcium phytoplankton. तो यहाँ पे इस फेनोमेना की वजह से कैल्शियम फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ और सर्वाइवल पर इफेक्ट पड़ता सकता है. वो है सर्वाइवल कोरल रीफ वायरस इफेक्ट जो कोरल रीफ को ग्रोथ और सर्वाइवल जो है वो इफेक्ट करता है. सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल दैट हैव फाइटोप्लैंक्टनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. कुछ एनिमल को सर्वाइवल जो है फाइटोप्लैंक्टनिक लार्वा रहता है जो एडवर्सली अफेक्ट करता है.
Tides. The periodic rise and fall of ocean water twice a day, mainly due to attraction of the sun and the moon. Tides. The periodic rise and fall of ocean water twice a day, mainly due to attraction of the sun and the moon. तो जो ओशन बढ़ता है या कम होता है दिन में 2 बार ऐसा होता है सन और मून का अट्रैक्शन की वजह से. Reason for tidal gravitational pull of the sun and moon and the centrifugal forces are responsible for creating two major tidal bulges on the earth. Gravitational pull जो है सन और मून का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ में मेजर टाइडल बल्ज लाने के लिए. On the side of the earth facing the moon, a tidal bulge occurs due to pull of the moon, while on the opposite side, centrifugal force causes a tidal bulge. अर्थ के दूसरे साइड में मून जो है टाइडल बल्ज वो होता है मून का और ऑपोजिट साइड में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स टाइडल बल्ज लाता है. When the tide is channeled between the island or into bay and estuary, they are called tidal current. जब लैंड या फिर बेस और estuary के बीच में चैनल होता है तो टाइडल करंट होता है. The vertical distance between high tide and low tide is the tidal range. टाइडल रेंज क्या रहता है? हाई टाइड और लो टाइड के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस होता है. Movement of water caused by meteorological effect, wind and atmosphere pressure change are called surge. सर्ज क्या होता है? वाटर का मूवमेंट जो मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से होता है. विंड और एटमॉस्फेयर प्रेशर में चेंजेस आते हैं उसको सर्ज बोलते हैं. ओशन करंट. Ocean current. Large masses of water flowing constantly irregular pattern on the ocean surface in definite direction. Ocean current क्या होता है? वाटर का ज़्यादा मास फ्लो करता है रेगुलर पैटर्न में ओशन सरफेस में डिफरेंट डायरेक्शन में. यूजुअली इट इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस. ओशन करंट स्ट्रॉन्ग रहता है सरफेस में. डिफरेंस ऑफ वाटर डेंसिटी अकर वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द ओशन करंट. तो वाटर डेंसिटी फ़र्क पड़ता है जो ओशन करंट का वर्टिकल मोबिलिटी पर इफेक्ट करता है. वाटर with high salinity or colder in nature denser and hence tend to sink. वाटर जिसका सैलिनिटी ज़्यादा रहता है या ठंडा रहता है नेचर में वो ज़्यादा डेंस रहता है इसलिए इंसान उसमें डूब सकता है. फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन करंट. फैक्टर जो ओशन करंट पर असर लाता है. इंसुलेशन हीटिंग एक्सपांड वाटर क्रिएटिंग एंड डाउन हिल ग्रेडियंट इक्वेटर. वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर देन द मिड लैटिट्यूड. इंसुलेशन जो गर्म होता है तो वाटर एक्सपांड करता है ग्रेड करता है डाउन हिल ग्रेडियंट को. इक्वेटर वाटर जो है 8 सेंटीमीटर ज़्यादा रहता है मिड लैटिट्यूड से. विंड
पुश द ओशन वाटर टू मूव ड्यू टू सरफेस फ्रिक्शन। विंड जो है पुश करता है ओशन वाटर को, मूव होता है सरफेस फ्रिक्शन की वजह से। ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड मूव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फ्लोरिडा करंट। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की तरफ जाता है। फ्लोरिडा करंट, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड साउथ इक्वेटोरियल करंट की तरफ जाता है, वार्म करता है ब्राज़ील ईस्टर्न कोस्ट को। वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्ली ड्राई वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉर्मिंग द पेरुवियन एंड वेनेजुएला। वेस्टर्ली सदर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्ली ड्राई करता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट को, फॉर्म करता है पेरुवियन और वेनेजुएला करंट को। मानसून विंड इन नॉर्थर्न इंडियन ओशन, करंट चेंज विद नॉर्थ ईस्ट विंटर एंड साउथ वेस्ट समर। मानसून विंड, तो मानसून विंड में नॉर्थर्न इंडियन ओशन करंट चेंज करता है नॉर्थ ईस्ट विंटर में, साउथ वेस्ट समर मानसून विंड में। Eastward flow of equatorial countercurrent trade winds push the water towards the west, but land masses on the west obstruct the flow. तो ईस्टवर्ड फ्लो जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट का ट्रेड विंड जो है वाटर को पुश करता है वेस्ट की तरफ, लैंड मास जो है वेस्ट में ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो। Gradient develop there and water start moving toward the east under its influence as the influence of wind and not significant due to the presence of cold doldrum। तो ये ग्रेडियंट डेवलप करता है, वाटर जो स्टार्ट होता है ईस्ट की तरफ इसके इन्फ्लुएंस के अंदर, विंड के इन्फ्लुएंस में, और कुछ डोल्ड्रम के प्रेजेंस पे होता है। Effect of ocean current, area where the warm and cold current meet provide the best fishing ground in the world। एरिया जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलते हैं एक ही जगह पे, वहाँ पे पूरी दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड है फिशिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल सी अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दिस एरिया ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर नेविगेशन। तो यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट दोनों मिलता है, तो ये जापान का समुंदर और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में है ये ऐसा जगह जहाँ पर दुनिया का सबसे अच्छा ग्राउंड मिलता है फिशिंग के लिए। लेकिन ये एरिया बहुत फॉगी भी रहता है, तो नेविगेशन करना बहुत मुश्किल होता है। Example of THC, thermohaline circulation, THC, El Nino Southern Oscillation ENSO, research in THC can modify ENSO cycle। El Nino Southern Oscillation ENSO जो है डिस्टर्ब करता है THC को, मॉडिफाई करता है ENSO साइकिल में। इंडियन ओशन डाइपो आयोडी इन्फ्लुएंस हीट डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट मानसून साउथ एशिया, इन्फ्लुएंस करता है हीट डिस्ट्रीब्यूशन को, इफेक्ट करता है साउथ एशिया का मानसून में। Global implication, THC balance is vital for weather pattern, nutrient cycle and marine ecosystem। THC balance जो है वाइटल है weather pattern, nutrient cycle और marine ecosystem में। Its weakening often tied to climate change, pose significant risk to biodiversity, agriculture and human settlement।
ये तेज़ से कमज़ोर होता है। क्लाइमेट चेंज लाता है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ा असर आता है एग्रीकल्चर ह्यूमन सेटलमेंट्स में।